academic procession is entering the hall. You are requested to please rise in their honor. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Professor Riaz Anwar, Advisor for Health to the Chief Minister Khyber Pakhtunkhwa. Professor Ijaz Hassan Khan, the Vice Chancellor, Gandhara University. Dr. Jafar Khan, Dean, Wazir, Institute of Allied Health Sciences. Mrs. Afsha, Principal, Farkhanda Institute of Nursing. Mr. Hamid Rasool Niazi, Principal, Kabir Medical College. Principal, Sardar Begum Dental College. The faculty members of the Gandhara University. My dear students, graduates, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. We are going to start the proceedings. You are requested to please rise for the national anthem. Ladies and gentlemen, we begin with the name of Allah. I request Qari Abdul Rauf Madani Sahab to please come and recite verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى
ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق الله العظيم. अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिन्होंने हक़ रिसालत पूरा किया और ये कि कोई शख्स दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है और ये कि उसकी कोशिश देखी जाएगी फिर उसको उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह कारी साहब। कारी साहब ने बहुत जहमत की। वो सिर्फ हमारे इस तकरीब के लिए कराची से तशरीफ़ लाए हैं, एक बहुत अहम मीटिंग छोड़ के। हम उनके बहुत मशकूर हैं। Mr. Vice Chancellor, sir, I request you to declare the convocation open. Bismillahirrahmanirrahim. I hereby declare the convocation open. Mr. Vice Chancellor, sir, may the candidates be presented for the conferment of degrees. Let them be presented. The graduates and postgraduates are requested to please rise in their seats. All the graduates, please rise on their seats. Mr. Vice Chancellor, sir,
I present to you these persons who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degrees of BSc Honors and BS in various technologies of paramedics, post RN and BSN from Farkhanda Institute of Nursing, for which degree I pray they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of Gandhara University, I admit them to the degree of BSc Honors, and BS in various technologies from Wazir Muhammad Institute of Allied Health Sciences, and BS Nursing and Post RN from Farkhanda Institute of Nursing. And in token thereof, I present to them these degrees and authorize them to wear the robes ordained as the insignia of these degrees. Now the principal Farkhanda Institute of Nursing is invited to administer the oath to the graduates and postgraduates of Farkhanda Institute of Nursing. The graduates are requested to rise, please. Bismillahirrahmanirrahim. I solemnly pledge myself before God and in the presence of this assembly to pass my life in purity and to practice my profession faithfully. I will abstain from whatever is deleterious and mischievous, and will not take or knowingly administer any harmful drug. I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession, and will hold in confidence all personal matters committed to my keeping, and all family affairs coming to my knowledge, in the practice of my calling. With loyalty, I will endeavor to support all members of healthcare team, and as a missioner of health, I will dedicate myself to the devoted service of human welfare. Thank you. Now the principal Wazir Muhammad Institute of Allied Health Sciences will administer the oath to the graduates of his institute. The graduates are requested to rise, please. Bismillahirrahmanirrahim. As a graduate of Allied Health Sciences, I that I shall abide by the principles laid down in the Code of Medical Ethics, that I shall devote my life to the service of humanity, that I will give to my teachers the respect and gratitude which is their due, that I will practice my profession with conscious dignity and fear of God, that the health of the ill be my first consideration, and to maintain the best possible conduct, that I will maintain the utmost respect for human life
ethics and values, that I make these promises solemnly, freely, and upon by my honor. So help me, Almighty Allah. Ameen. Thank you. All the graduates and postgraduates are required and requested to please line up for the award of degrees. I request the chief guest, Professor Riaz Anwar Khan, the Vice Chancellor, Gandhara University, and the Principal, Farkhanda Institute of Nursing, to please come forward and give away their degrees, please. Amna Bibi, Fozia Bibi, Meher Nigar, Nahida Gul, Nimra, Rosina Salim, Sultana Bibi, Taj Mina, Uzma Alam, Zainab Bibi, Anila Bibi, Arika Gulzar, Bibi Mujahida, Gulshan Bibi, Imrana Kosar,
सफिया अक्षर, सना बीबी, शबाना बीबी, सुरैया, I think Zakia Bibi is not here. Zakia Bibi, Abdul Basit, Abrarul Haq, Adnan Khan, Amanullah, Anis Khan, Anwar Zeb Khan, Aziz Ahmed, Basit Ali, Hanzallah Khan, Hazrat Umar, Izharul Haq, Junaid Khan, Justin, Kashifur Rahman, Muhammad, Muhammad Ali, Muhammad Khayyam, Muhammad Shoaib, Noman Yunus, Roshan Imtiaz, Saeedullah,
Saifullah Khan, Wahidullah, Zeb Munawwar. Thank you, Madam Principal. Now I request the Dean, Wazir Institute of Allied Health Sciences, to please come forward to award the degrees to his graduates. Husna Gul, Kainat Sayyid, Karin Sayyid, Kosar Khanam, Laiba Khan, Misbah, Naila Gul, Palwasha Salim, Poonam Naz, Rida Bibi, Sumbal Arshad, Uzma Kishwar, Yusra Wazir, Abbas Ahmed, Abdul Qudus, Abdul Sabur, Abdul Rahman, then Abdul Rahman, Abid Ali, Abidullah, Ahmed Faraz Khan, Ahmed Khan, Ahmed Shah,
Alamzeb, Ali Sher, Ali Mullah, Arifullah, Asghar Ali Khan, Asim Hewad, Basit Ali, Behram Khan, Bilal Ahmed, Bin Yamin, Isa Khan, Farhadullah, Farmanullah, Farooq, Hamad Khalil, Hazrat Ali, Hazratullah, Hussain Jan, Ishfaqur Rahman, Junaid Ali, Junaid Alam, Kabir Ahmed, Kashif Ali, Khan Zamir, Muhammad Sajad Hussain, Maqsood Khan, Misbahullah, Muhammad Adil, Muhammad Adnan,
मोहम्मद आलमगीर, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद हफीजुल्लाह, मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद नोमान खान, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद रियाज खान, मोहम्मद शायान खान, मोहम्मद सुहेल खान, मोहम्मद सुलेमान खान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद वकास, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद यूसुफ, मोहसिन, मुनव्वर शाह, मुजम्मिल खान, नईमुल्ला, नूर नवाज खान, नूर समद, नुमान रहीम,
Noman Said, Ramzan Khan, Ramzan Yusuf, Rehanullah, Rifatullah, Ruhul Amin, Safiullah, Sajid Khan, Salim Khan, Samiullah, Samiullah, Saklan Musa, Sayyid Usama, Shabirullah, Shafiullah, Shahab Hussain, Shahabuddin, Shahzeb, Shakirullah, Sayyid Kamranuddin, Sayyid Hasnain Shah, Tariq Aziz, Usama Nawaz, Usman Khan, Waqas Muhammad, Wasim Khan, Zebullah,
Zakirullah, Zinatullah, Zishan Ahmad, Zishan Ahmad, then Zishan Ahmad, Wahidullah, Samiullah, thank you, sir. The graduates who got gold medals will be presented the medals by the chief guest, Professor Riaz Anwar Khan, the advisor for health to the chief minister, the vice chancellor of Gandhara University, and the dean Wazir Institute of Allied Health Sciences and Farkhanda Institute of Nursing. Amanullah, he got first position in BS Nursing session 2019-2023. Nirma, she got first position in Post RN 2021-2023. Farmanullah, he got first position in BSc Honors Medical Lab Technology. Laiba Khan, she got first position in BSc Honors Dental Technology. Zishan Ahmad, he got first position in BSc Anesthesia Technology. Tariq Aziz, he got first position in BSc Surgical Technology. Husna Gul, she got first position in BSc Medical Imaging Technology. Rida Bibi, she got first position in BSc Emergency Care Technology.
Junaid Alam, he got first position in BSc Medical Lab Technology. Kainat Sayyid, she got first position in BSc Dental Technology. Proud father. Basit Ali, he got first position in BSc Anesthesia Technology. Sajid Khan, he got first position in BSc Surgical Technology. Kiran Sayyed, she got first position in BSc Medical Imaging Technology. Muhammad Irfan, he got first position in BSc Emergency Care Technology. Muhammad Ilyas, he got first position in Medical Lab Technology. Asim Hajwad, he got first position in BSc Dental Technology. Muhammad Yusuf, he got first position in BSc Anesthesia Technology. Samiullah, he got first position in BSc Surgical Technology. Ishfaqur Rahman, he got first position in BS Medical Imaging Technology. Abdul Qudus, he got first position in BS Emergency Care Technology. Hamad Khalil, he got first position in BS Medical Lab Technology. Sayyid Kamranuddin, he got first position in BS Dental Technology. Muhammad Adil, he got first position in BS Anesthesia Technology. Ruhul Amin, he got first position in BS
Surgical Technology. Yusra Wazir, she got first position in BS Medical Imaging Technology. Muhammad Sajjad Hussain, he got first position in BS Emergency Care Technology. Thank you, sir. And congratulations to all the medal winners and all the degree winners. Ladies and gentlemen, I request the Vice Chancellor, Gandhara University, Professor Ijaz Hussain Khan, to please come and address the audience, please. Professor Ijaz Hussain Khan. Advisor for Health to the Chief Minister of Khyber Pakhtunkhwa, and my friend of more than 45 years, and my class fellow, Professor Riaz Anwar Sahib. Dean Allied Health Sciences, Jafar Khan Sahib. Principal, Wazir Muhammad Institute of Allied Health Sciences, Niazi Sahib. Principal, Farkhanda Institute of Shah, Dr. Ismail Kamar Sahib. Principal, Sardar Begum Dental College, Shahid Sahib. Principal, Kabir Medical College, Mashwani Sahib. Professor Ali Chughtai, Professor Parveen Azim, Professor Abdur Rahman, Controller Examination, Professor Iftikhar, Professor Mukhtar, and Asghar Sahib, faculty members, my dear students, Assalamu alaikum. I feel proud and confident to be present on this historical occasion of the 7th convocation of Gandhara University and the first convocation of Allied Health Sciences. Sir, healthcare delivery system begin with a consultant examining and reaching a diagnosis. But it is the efforts of the allied health professionals to produce the desired results of complete recovery of the patients. With new challenges in healthcare delivery system, the universities and the degree awarding institutions are not only keeping pace with the changing scenario, but are at times giving perspective vision to produce different qualified professionals to deliver as a healthcare support body. We at our institutions, Farkhanda Institute of Nursing and Wazir Muhammad Institute of Allied Health Sciences, are providing an academic environment which is feasible and acceptable and affordable to students from all backgrounds. Our dedicated faculty, staff, and the management is doing their best to provide all possible and available facilitation. Farkhanda Institute of Nursing is running BS Nursing and Post-RN courses, and the graduates produced are making a difference by being placed in institution and are praised where they work. Farkhanda Institute is having purpose-built state-of-the-art building with facilities of properly equipped classrooms, library, laboratories, skill lab, and proper training facilitation at our teaching hospitals. We are in the process of preparing ourselves to start MSN program, inshallah. Wazir Muhammad Institute of Allied Health Sciences is currently running BS programs in 6 disciplines, and we are in process of, or almost the process is nearing its completion, starting postgraduate program in Allied Health Sciences, which is very much needed.
Training facilities are provided at Nasir Teaching Hospital, MMC, Shahab General Hospital, and Sardar Begum Dental Hospital, beside our MOU with Hyderabad Medical Complex and IRNAM. Sir Gandhara University is having a tradition of providing facilitative environment to the students, staff, and faculty. And we are religiously working as per the directives of Higher Education Commission, Higher Education Department, and Health Regulatory Authority. This was the vision of our worthy, mine and your teacher and founder of this institution, Professor Muhammad Kabir, and we, under the patronage of our Honorable Chancellor and Board of Trustees, do every possible effort to take it ahead as per the requirements of modern day teaching learning methodologies. Sir, we have established integrated modular system at our medical and dental school, and we are the first one in the province to have completed 4 years of this integration. And Khyber Medical University has signed MOU with us to help in that. And we are now trying to extend this to the nursing as well as to allied health sciences, because this will benefit the students on getting good scores, high GPA, and which will facilitate them for further postgraduate training. We have research journal for allied health sciences, beside having a research journal of medical sciences and a journal for students. We are also trying to start MS programs in different disciplines, and PhD program has already been started. अब मैं कुछ बातें नौजवानों से करना चाहूँगा आपकी मौजूदगी में। मायूसी गुनाह है। कौमों की ज़िंदगी में, मुल्कों में मुख्तलिफ हालात आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, हमें भी दरपेश हैं, लेकिन मुझे यकीन है और मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है और ये तरक्की करेगा। जब हम डॉक्टर परवीन, जब हम छोटे या नौजवान थे तो उस वक्त हम एक गीत सुनाया जाता था जो आज नापैद हो गया, लेकिन मैं नौजवानों को उसका एक शेर याद दिलाता हूँ और इनको इस पे अमल करना चाहिए कि ले आए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। शुक्रिया। Thank you, Professor Ijaz Hasan Khan. Now, I request the Honorable Chief Guest, Professor Riaz Anwar, Advisor for Health to the Chief Minister, Khyber Pakhtunkhwa, to address the audience, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. Honorable Madam Chancellor, Board of Trustees, Professor Ijaz Hasan, Vice Chancellor of Gandhara University, Professor Shahid Iqbal Saib, Principal Kabir Medical College, Principal Sardar Begum Dental College, Professor Mashwani, Principal Kabir Medical College, Dr. Jafar, Dean Allied Health Sciences, Dr. Ahmed Rasool Niazi Saib, Madam Afshan, Principal Farkhanda College of Nursing, Qari Rullah Madni Saab, probably he has left, respectable faculty members, dear students, respectable parents, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Indeed, it's a great honor and privilege for me to stand in front of you amongst the youngsters who achieved the degrees, achieved their goals which they wanted in their life. I must emphasize at this occasion that don't forget your parents, your families, your well-wishers, even your Maulana Sahib who were giving you dars in masjid, don't forget them on this occasion.
I would like to request you to stand up and give a big clap for your parents who are sitting on the right-hand side, on the left. This was their hard work, dedication to raise up to this standard, to get you admitted in a private institute, to get you trained in a private institute for 4 to 5 years. It was a hard effort. I would like to congratulate all these parents, myself as well. Regarding Ijaz Sahib has said, Gandhara Institute, Gandhara University, I am witness to it when it started long way in 1997-96. It was started from Kabir Medical College only, but the vision was that they would have various institutes, and which you have witnessed and you are studying in that. Kabir Sahib was our teacher, our mentor, and he was an icon of surgical profession, icon for the students, and icon for his own family as well. Nursing Institute was established by the name of Farkhanda Institute of Nursing. Allied Health Sciences Institute was established. It was not established only for the sake of money. It was established to strengthen the medical college, to strengthen the medical institution, not only in the Sea Teaching Hospital or the affiliated teaching hospitals, but for in general, because I believe that nursing profession and allied health sciences are the backbone of any medical profession. If you don't have this strong team of nurses and don't have the strong team of allied health workers, irrespective what operation you do as a professor of cardiac surgery or professor of medicine, it is all in vain. जब आप लोग काम नहीं करेंगे, जब आप लोग fully qualified नहीं होंगे, तो कैसे टीम आगे बढ़ेगी? We have to work as a team for a patient care. Only patient care will improve when you have a qualified healthcare profession with you. इंग्लैंड या अमेरिका क्यों कामयाब हुआ? इसलिए वो कामयाब हुआ, ये एग्जाम्पल आपके सामने है. मैं जब इंग्लैंड से वापस आया 1995 में, there was only diploma courses, 9 months and 3 years nursing training, if I'm not wrong, Madam Afshan. So the nurses were not aware of what they are doing now, because things have changed, times have changed. World is a global village. I will say it has changed from global village to a global house or global mahalla, because any change that has been taking place in America, it has been just translated into reality in Pakistan within few hours. I was watching other day the update software. It is really the whole world, the whole research work is in your hand. You can say how it's in my hand, because you always wibble and rebel with your mobile phones. If you want to see any research article, if you want to see any research or the latest treatment trend for any disease, it is over there. So, एक ये youngsters को ये भी request है कि और तो बड़ी चीजें आपने upload की होती हैं ये mobile phone पे, इसको भी upload कर लें. Update, it's a software. Chancellor sir. शायरी तो मुझे नहीं आती, लेकिन इजाज साहब ने तो बड़े अच्छे 2-3 शेर कहे. Let to appraise you about the situation in health system. Being in charge of health system, looking after health affairs for the last 1 year, I just want to let you know that there are only 5,500 registered nurses in KP for a population of more than 3.5 crore. Is it sufficient? Nothing. And out of those 5,500 nurses, I think most people are going abroad. I was asked to stop their resignations. People are resigning. Your madam is witness to this thing. They are going to Kuwait or Dubai. I put my foot down. I say, let them go. If the government is not providing them enough salary structures, not giving them enough monuments, what they need for their family life, to earn their bread and butter,
we can't stop them. They say that, sir, this will be a brain drain. I say it's not a brain drain. I am stopping brain into the drain. If these youngsters go out, allied health sciences workers, the anesthesia technician, which I hugged one of the boys sitting here, he can independently anesthetize a cardiac patient. I'm witness to this thing because he works with me in theater. So this is the standard we want to obtain. And if in return we don't want to appreciate their talent, definitely they'll go back. देखें आज तक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की जो ये डबलिन जिसका कैपिटल है सदर्न आइलैंड उसकी पॉपुलेशन का वही है कि 20 मिलियन 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो रही है. क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो रही है कि जो टैलेंट ऊपर आ रहा है वो बाहर जा रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है. तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यंगस्टर्स टू कम. इसके बगैर हम तरक्की नहीं करेंगे. और इंशाल्लाह आने वाली गवर्नमेंट, आई होप दे विल ट्राई देयर बेस्ट to get the opportunities for these youngsters and revise your salary scales, revise your pay scales, and so that you can look after a family very comfortably, and you should have a comfortable life while working in the hospital environment. Being a fatherly figure, no, I think from this forum I would like to कुछ थोड़ी सी नसीहतें भी आपको कर लूँ. Baki, I congratulate you all for getting your gold medals and degrees, and especially I would like to appreciate your parents who are sitting. The Grand Qadri Madaparada told Masharanchikum Dekhwa Nasti, Staso. बच्चे दायास आते ही के दाना उन उतासु बदलते न भाई उदय खिदमत तासु बांधे फर्ज दे इस्लाम के मदे वो रिलीजियस लिम तासु हैं आसिम बाइसियत यो प्लारम तासु हैं बच्चे we come across many challenges. Patient is a challenge. हमने कोई हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई नहीं लड़नी है. हमने पेशेंट की लड़ाई लड़नी है कि to have a safe treatment within the resources, within the hospital premises, so that he can walk out of hospital happily हमें दुआएं देता हुआ जाए. So we have to work as a team work. टीम से क्या बनता है मैं बड़े लोगों से पूछता हूँ. बड़े लोग कहते हैं लेकिन इसका मतलब नहीं पता चलता. हो सकता है आप में कुछ पढ़ने वाले बैठे हों. हमने तो ये सीखा है together everyone achieve more. Together everyone achieve more. तो as a team we have to work. डॉक्टर अगर आपका कैप्टन है तो ठीक है, वरना आप भी कैप्टन एज अ कैप्टन काम करते हैं. जब आईसीयू में होते हैं, अकेले होते हैं, ड्यूटी करते हैं. एक चीज़ याद रखें कि अपने मॉरली और अपने कैरेक्टर का हमेशा ख्याल रखना है. नो बॉडी फिंगर आउट दैट डॉक्टर तो अच्छा है, नर्स तो अच्छा है, अच्छी है, ये पैरामेडिक तो अच्छा है, लेकिन कैरेक्टर वाइज ये ठीक नहीं है, मॉरली ये ठीक नहीं है, बदतमीजी करता है, ये करते हैं. बेटे फॉरगिव दीज हैबिट्स, बी पोलाइट विद पेशेंट्स. गोरा जमुंगा मसीहान उकार देखे ना. वी आर नॉट देयर टू डिक्टेट द पीपल. इस स्टेज पे भी आई एम आफ्टर माई रिटायरमेंट even still I practice cardiac surgery. If somebody says something, I just give a smile. I say, okay. My junior, they said, sir, he's a patient. So we have to maintain the patient dignity and the patient autonomy as well. ये नहीं है कि जो आपका दिल करे आप दें. पेशेंट से पूछ लें कि सर क्या खाएंगे आप, क्या पिएंगे. उसको एक encouraging words चाहिए. आपकी नर्सिंग का वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या किया, एक सफ़ेद यूनिफॉर्म पहन कर आई, हाथ में ग्लव्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे. शी मेड अ नेम, शी वन द नोबेल प्राइज. व्हाई नॉट यू कैन ऑल विन इट. एंड अगेन आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन एथिक्स. हैव एन एथिक्स वेयर एवर यू आर वर्किंग. अपने प्रोफेशनलिज्म को मत छोड़ें, एथिक्स को मत छोड़ें. और इजाज़ साहब ने कहा कि हमारे तो यहाँ रिसर्च के जर्नल्स निकलते हैं. मुझे पता था कि एक है, इन्होंने कहा दो हैं. दो हैं जैसा, तीन हैं. तो बेटे रिसर्च इज अ टूल वेयर यू कैन प्रोग्रेस, वेयर यू कैन प्रेजेंट टू द पीपल दैट यू आर नॉट ओनली स्टडिंग एंड गेटिंग दिस डिग्रीज, बट यू आर गिविंग समथिंग न्यू टू द वर्ल्ड, समथिंग न्यू ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट.
something new idea. तो एक इंग्लिश में कहावत है, एजाज साहब तो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं मेडिकल एजुकेशन में, मैंने ऐसे ही कहीं पढ़ा था कि रिसर्च में कि इधर यू पब्लिश और पेरिश। अगर पब्लिश करोगे तो जब तक वो किताब या वो जर्नल लाइब्रेरीज में पढ़ते रहेंगे लोग आपको याद करते रहेंगे, वरना एक दिन मर जाएंगे, कब्र पे लिखा होगा कतबे पे कि फलाना फलाना मर गया था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और कुत्ते बैठे होंगे, बिल्ले बैठे होंगे, और कुछ भी नहीं होगा। तो बेटे रिसर्च पे एम्फेसाइज करें। अच्छा, ये यंग जनरेशन, यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, लॉट ऑफ कैपेबिलिटीज़, यू आर इंटेलिजेंट पीपल। ये हाथ में आपके मोबाइल ये और चीज़ों देखने के लिए नहीं होना चाहिए, फेसबुक वगैरह के लिए, रिसर्च के लिए इसको इस्तेमाल करें। मैंने आपको कहा है अपडेट, एजाज साहब को भी कहा है इस सॉफ्टवेयर को ले, आपकी यूनिवर्सिटी के लिए भी आना चाहिए। देन इन योर लाइफ देयर विल बी सम अचीव योर एम्स व्हाट यू वांट टू डू। ये एक आज एम तो आपका पूरा हो गया माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट यू वांट टू अचीव, देयर विल बी डिस्ट्रैक्टर इन योर लाइफ। कोई आपको इधर से तंग करेगा, कोई टेलीफोन आएगा, उसके साथ आप 2.5 घंटे बात करेंगे, फिर कोई और टेलीफोन आएगा। बेटे दीज आर ऑल डिस्ट्रैक्टर्स, मीन जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर कैरेक्टर। ये लोग कहते हैं ना कि ईगल इज़ अ हाई अचीवर, आप देखते हैं तस्वीरों में भी ये पीएफ का स्लोगन भी है, जितने पाकिस्तानी एयरफोर्स का, बी एन ईगल। वाई बी एन ईगल? बिकॉज ईगल डजंट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम एनीवन। एक मिसाल आपको देता हूँ कि एक दफ़ा ईगल ऊपर उड़ने के लिए जा रहा था, तो कौवा उसकी गर्दन पे बैठ के उसको पोर्क कर रहा था कि ये ना उड़ सके। ईगल ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी परवान शुरू की और कौवा बीच में कहीं गिर गया नीचे। तो जब वो गिर गया और ईगल अपनी जो उसकी हाइट थी उस तक वो पहुँच के वापस आ गया, उससे पूछा गया कि आपने इसको पहले क्यों नहीं नीचे गिराया। उसने कहा कि अगर मैं इसको पहले नीचे गिराने की कोशिश करता तो मैं शायद इतनी हाइट ना गेन कर सकता। तो जो डिस्ट्रैक्टर था उसने उसकी परवाह नहीं की, उसने अपनी अचीव किया अपनी हाइट। तो आपने भी बी एन ईगल, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम पीपल इन योर लाइफ, फ्रॉम राइट और लेफ्ट। और एक और बात आपको कह दूं, द टेक्निक्स और द नॉलेज दैट यू लर्न टुडे, नोबडी कैन टेक इट बैक फ्रॉम यू नाउ। अल्लाह पाक आपके नसीब करे ये द गबीनो आप वो मचे नहीं आए ना चाहते पोसो को चे तो को पर जरगुनो टनूनो बांधे दा शहद जोड़े हर काल। एजाज साहब के इलाके की शहद कभी कभी हमें ला कर खिलाते हैं। तो आप ये शहद, आप क्यों इनके लिए इतने शहद बनाते हैं? ये ह्यूमन बीइंग भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। उसने कहा खाने दो जो चीज़, लेकिन शहद बनाने का हुनर इनको नहीं आता है, वो मैंने इनको नहीं दिया है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने हुनर सीख लिया है, हुनर आपको आगे है, इसको आगे लेकर जाएं। देन बेटे एक और एग्जांपल जो मैं देता हूँ हमेशा स्टूडेंट्स को, वो ये, आई थिंक आई एम नॉट गेटिंग लॉन्ग, बी अ डायमंड। आपने कभी सोचा होगा कि डायमंड क्यों इन लोग कहते हैं कि बी अ डायमंड? डायमंड इसलिए कहते हैं कि एक दफ़ा एक बादशाह से पूछा गया कि उसके दोस्त ने आर्टिफिशियल डायमंड बनाए। उसने कहा कि इन डायमंड को, आर्टिफिशियल और रियल डायमंड को कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। बेटे दिस एग्जाम्पल इज़ फॉर योर यंगस्टर्स, प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली। उसने कहा ठीक है। उसके वज़ीर को कहा कि आप ऐसे करें कि ये डायमंड जो हैं ये कल से अनाउंस करें कि जो बंदा इस रियल डायमंड और आर्टिफिशियल डायमंड को डिफ्रेंशिएट कर ले बेल की, जो वो चाहेगा उसको इनाम मिलेगा सिवाय मेरी बादशाहत के, और जो नहीं करेगा उसको मारा जाएगा। तो पहले दिन 15-20 लोग आए, 15-20 के मर गए। फिर इस तरह कोई 4-5 है। ये सिलसिला एक हफ्ते तक चलता रहा। लोग आते रहे और मरते रहे, किसी ने इनको आइडेंटिफाई नहीं किया। 1 महीने बाद एक नबीना बंद शख्स आया और उसने कहा कि वज़ीर साहब को कहा कि मुझे इजाज़त है, आपने एक अनाउंसमेंट की थी, मैं इन डायमंड को अलहदा कर सकता हूँ। उसने बादशाह साहब से कहा कि यार ये ठीक है या नहीं? बादशाह साहब ने कहा कि जी आप आंखों वाले इसको अलहदा नहीं कर सके तो ये कैसे करेगा? फिर बादशाह ने कहा चलो इसको इजाज़त दे दो। उसने दे दी।
उसने कहा 2 बैग भी ले आओ और उसे दोनों डायमंड्स धूप में बाहर फर्श पे लगा दिए। थोड़ी देर बैठा रहा, 1 घंटा गुजर गया, उसके बाद उसने डायमंड अलहदा करने शुरू कर दिए। 2 बैग्स में उसने डायमंड डाल के वजीर साहब को दे दिए। उसने कहा दीज आर द रियल डायमंड्स एंड दीज आर द आर्टिफिशियल डायमंड्स। दे वर टेकन टू द किंग एंड किंग आस्क्ड हिज फ्रेंड टू कम एंड से राइट और रॉन्ग। तो उसने जब देखा तो उसके दोस्त ने कहा कि ये तो इसने बिल्कुल ठीक वो किया ही है, ये अंधे शख्स ने कैसे कर दी। इट वॉज अ क्यूरोसिटी। अंधे शख्स को बादशाह साहब ने बुलाया कि भाई आपने कैसे आइडेंटिफाई किए, आपकी तो आंखें भी नहीं हैं। उसने कहा सर जो चीज़ गर्म होती है वो कभी हीरा नहीं होता, तो रियल डायमंड्स आर ऑलवेज गोल्ड। तो आपके लिए मैसेज ये है कि बी अ रियल डायमंड। लाइफ में बड़े चीज़ें आएंगी, अप्स एंड डाउन्स, गुस्से में नहीं आना, घबराना नहीं है, ठीक है। मतलब गाली गलौज की बात नहीं जानी चाहिए। ऑलवेज प्ले कूल बिकॉज आवर प्रोफेशन इज लाइक दैट। In the last, I would like to say that while climbing up the ladder of your career, जब आप अपनी मंजिलें तय करते ऊपर जा रहे हों, अल्लाह पाक आपको तरक्की दे, तो बेटे ये जो लोग आपके इस साइड पर बैठे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके बहन भाई हैं, मौलाना साहब हैं जो मस्जिद में आपको पढ़ाते रहे हैं, उनको कभी मत भूलें। हमेशा उनका ख्याल रखें, सोसाइटी का ख्याल रखें, उन लोगों का ख्याल रखें जिन्होंने आपके इस दौरान तलीम आपका ख्याल रखा, शाबाश भी कभी दी, उनका भी ख्याल रखें। And with all these remarks, Allah Pak bless you all and thank you very much. बहुत ही खूबसूरत बातें की प्रोफेसर रियाज अनवर खान साहब ने। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो तशरीफ़ लाए और हमारे इस आज के प्रोग्राम को रौनक बख्शी। I request the Vice Chancellor of Gandhara University to present the convocation crest to the Chief Guest. Now I request the Dean Wazir Institute of Allied Health Sciences to please come and give a vote of thanks. Well, thank you, sir. I wish I could go beyond this written script. Thank you, Honorable Chief Guest, for such a kind and enlightening words. Thank you, sir, Vice Chancellor, for always your encouragement and patronage. This is a very historic day, first convocation of the Allied Health Sciences and the 7th of the Gandhara University. So I have the honor to thank all of you. It's my proud privilege on behalf of the faculty, management and staff of the Gandhara University to thank the Honorable Chief Guest, Professor Dr. Riaz Anwar, Advisor for Health to the Chief Minister Khyber Pakhtunkhwa for sparing precious time in gracing this momentous occasion. Certainly, sir, it would be very inspirational and great memories for the young graduates and all of us. I also thank the worthy Vice Chancellor who has always been supportive in the academic fulfillments of the students and the administrative patronage of the institute. I thank the members, Board of Trustees, Principal Kabir Medical College, and Principal Sardar Begum Dental College, Administrator Nasir Teaching Hospital, heads of the departments, deans of the faculties, registrar, and all the sectional heads for their participation in this convocation.
In holding this event, we owe our special thanks to the Director of Finance, who extended all possible financial support, the Director of Planning and Development for the logistic support, and the Controller of Examination for timely processing of the degrees and gold medal awards. I am grateful to the Chief Organizer, Professor Dr. Ismail Kamar, and Principal Wazir Muhammad Institute of Allied Health Sciences, Principal Farkhanda Institute of Nursing, and the staff who worked day and night to make this auspicious gathering delightful and successful in a very short period of time. I also appreciate the press and the media for their commendable role to cover this ceremony at the Gandhar University, Peshawar, and also making it a memorable one. I express my sincere thanks to the respected parents and the guests for witnessing the great moments of the day. Your presence has glorified this event. Finally, I congratulate all the graduates and their respectable families for their wonderful achievements in pursuing their career goals. Thanks to all of you for being here with us. God bless you all. Mr. Vice Chancellor, sir, I request you to declare the convocation closed. I declare the convocation closed.